Hello students, class 8. Today I am going to start a new chapter. Chapter's name is Squares and Square Roots. So जब भी हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, one thing comes in our mind. Like this shape. This shape is called square. Fine. But this is a geometrical square. हम इस स्क्वायर के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में. Fine. But now we will study about algebraic square. Okay. Suppose side of this square is 3. So area of this square will be 3 multiply 3. Fine. Now square अगर हम पढ़ते हैं algebraic section में. So in algebra, if we have any number like suppose 3, fine, and if a question to find the square of 3, so what we will do? We will multiply 3 to 3. मतलब उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो भी नंबर हमें मिला है हम उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड वी कैन राइट इट एज 3 raised to the power 2. ऐसे हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर को. फाइन. स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी विल पुट ए पावर 2. फाइन. किसी भी नंबर के पावर में अगर हमने 2 लिख दिया, दैट मीन्स उस नंबर का वो स्क्वायर है. सपोज आई एम राइटिंग लाइक 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर. वी विल रीड इट एज 5 स्क्वायर. सपोज आई एम राइटिंग 6 and raised to the power 2, this will be called 6 square. Fine. 6 square means we will represent square like this in power. Fine. So I think you understood what is a square. Now suppose I have a question to find a square of numbers 1 to 10. Fine. So how we will find? 1 square is equal to 1 multiply 1. 2 square is equal to 2 multiply 2. 3 square is equal to 3 multiply 3. 4 square is equal to 4 multiply 4. 5 square is equal to 5 multiply 5. 6 square is equal to 6 multiply 6. 7 square is equal to 7 multiply 7. 8 square is equal to 8 multiply 8. 9 square is equal to 9 multiply 9. And 10 square is equal to 10 multiply 10. If we will multiply these numbers, so 1 multiply 1, 1, 2 multiply 2, 4. 3 multiply 3, 9. 4 multiply 4, 16. 5 multiply 5, 25. 6 multiply 6, 36. This is a 49. 64, 81 and 100. ठीक है? So क्या हो गया? हमने इसका स्क्वायर कर दिया. Now these numbers 1, 4, 9, 16, 25, 36 and dot means many square numbers. These numbers are called as square numbers. These numbers are called as square numbers. Fine. And these numbers are also called as perfect square. Perfect square. These numbers are also called as perfect squares. Fine. So I think you understand what is a square and how we can find the squares of any number. Now we are going to discuss about properties of square numbers. Fine. So at first I will write here first property. After that I will explain you. So first property is
square numbers ends with digits 0, 1, 4, 5, 6, 9 and number of zeros in square numbers are even. Means property number 1 is saying square numbers ends with digits 0, 1, 4, 5, 6 and 9 and number of zeros in square numbers are even. Means suppose I am writing 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square is equal to 81, 10 square is equal to 100. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. 11 square is equal to 121, 12 square is equal to 144, 13 square is equal to 169, 14 square is equal to 196, 15 square is equal to 225, 16 square is equal to 256. ठीक है, यहाँ तक लेते हैं. अब देखो मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी क्या कह रही है, स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं उसका यूनिट प्लेस मतलब कि एंड्स विथ, स्क्वायर नंबर एंड्स विथ मतलब कहाँ से, यूनिट प्लेस जो होते हैं वो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या रहता है, स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9. ठीक है, देखो 1, 4, 9 यूनिट प्लेस पे 6, यूनिट प्लेस पे 5, ये भी तो यूनिट प्लेस ही है ना, तो यहाँ पे मैं 0 लगा दूँ, 2 डिजिट बन गए. अब देखो यूनिट प्लेस, चेक द यूनिट प्लेस 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6. So we are seeing in all square numbers unit place numbers is unit place digits are 0, 1, 4, 5, 6, 9. ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया. आगे and number of zeros in square numbers are even. Fine, number of zeros, suppose I am going to find the square of 10, so 10 square is equal to 100, 20 square is equal to 400, 30 square is equal to 900, 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600. तो सारे जितने भी मतलब कि आपको ये जो स्क्वायर दिख रहे हैं, जीरो वाले नंबर के स्क्वायर दिख रहे हैं, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, तो इसके स्क्वायर नंबर्स में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 2 है और 2 कौन सा नंबर है, इवन नंबर. फाइन, जब हम किसी भी जीरो वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद उसके नंबर में भी हमारे जीरोस ऑफ नंबर क्या होते हैं, हमें इवन मिलता है, नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलता है, इवन मिलता है. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 60 का, 60 स्क्वायर, दिस विल बी 3600. फाइन, तो सब में आपको 2 जीरोस मिल रहे हैं. अगर आप मुझे बोलते हो कि मुझे 400 का करना है, 400 का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कितने जीरो मिल रहे हैं, 4 जीरो मिल रहे हैं और 4 भी क्या है, इवन number. So I think you understood this property. Square numbers ends with digits 0, 1, 4, 5, 6, 9 and number of zeros in square numbers are even. किसी भी जीरो वाले नंबर का स्क्वायर करने के बाद अगर हमें इसको स्क्वायर मिलता है तो उस स्क्वायर में भी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, इवन होंगे. इवन मीन्स 2 जीरो होंगे या 4 जीरो होंगे, ठीक है, 6 जीरो होंगे, 8 जीरो होंगे, लाइक दिस. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द फर्स्ट प्रॉपर्टी. Now we will talk about property number 2 of square numbers. So property number 2 is, I have already written here, if any number has 1 or 9 at its unit place, then square of these numbers ends with digit 1. Means किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 1 या 9 हो, ऐसे नंबर का स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर नंबर भी
डिजिट 1 के साथ ही एंड होगा, मतलब उस स्क्वायर नंबर का भी डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा. फाइन. नाउ सी स्क्वायर ऑफ 0 1 स्क्वायर ऑफ 0 9 81. Check the unit place. Here is unit place 1. Here is 1's place 9. Fine. After that, square of 11 121. Square of 19 361. Check the unit place. Unit place number 1. Unit place number 9. And square number ends with 1. Square number ends with 1. After that, we can also take 21. 21's square we have 441. So square number ends with 1. So I think you understood the meaning of this property. किसी भी नंबर के अंत में या किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 1 और 9 हो, अगर उसका स्क्वायर हम करें तो उसका स्क्वायर नंबर भी 1 के साथ ही खत्म होगा, उसका उस स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस भी 1 होगा. फाइन. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड प्रॉपर्टी नंबर 2. सो नोट डाउन इन योर नोटबुक. Now we will talk about property number 3 of square numbers. So property number 3 is, if any number has 4 or 6 at its unit place, then square of these numbers ends with digit 6. So I think I understood the meaning of this property. I am again repeating. If any number has 4 or 6, if any number has 4 or 6 at its unit place, then square of these numbers ends with digit 6. So now see the examples. Square of 4 16. Square number ends with 6. Square of 6. Square number ends with 6. And the unit place numbers of these numbers are 4 and 6 according to this property. Now square number of 14, this will be 196. Square number ends with 6 and here was the unit place number 4. Now square of 16, this will be 256. Square number ends with 6 and here was the unit place number 6. So note down in your notebook, and I think you understood. Now we will discuss about fourth property of square numbers. So at first I am writing here. Fourth property is, if any number has 3 or 7 at its unit place, then square of these numbers, then square of these numbers ends with digit 9. So at first see with concentrate what I wrote here. Property number 4 is, if any number has 3 or 7 at its unit place, then square of these numbers ends with digit 9. So see the examples. Unit place is 3. Fine. If I will square of 0 3, so I will get 0 9. Square number ends with digit 9. Now square of 0 7. Here is the unit place 7. Now the square of this number is 49. Square of this number ends with 9. Now square of 13. Unit place is 3. Fine. And square number
will be 169. 169 is the square of 13. Now square number ends with 9. After that, we can take square of 17. So we will get 289. So square number ends with 9. Fine. So I think you understood what I wrote here. This is the property number 4. Now write all the properties in your notebook. Fine.